So hello everyone. Today we are at the 32nd question by the way. अब आप लोग हम many of you must be wondering, many of you तो क्या कोई नहीं देखता, लेकिन many of you must be wondering कि I didn't upload the 31st video. It was because it took me about an hour to complete that specific question, and I can't submit an hour long video, so that's the reason I'm not publishing that specific 1 hour long video. So we'll be trying today's question. Let's see what happens. सबसे पहले तो इस पर जाने की ज़रूरत नहीं है. We just move to this and we'll just move to lletcode and problems. We'll do the today's problem for the verification purpose. I will show you. We have done 32 questions by the way, and today we'll be doing the 33rd question. I don't know what day are we at, so we'll see क्या होता है क्या नहीं. Minimum window substring. Let's see. This is the question that we have today. And for the time being, control on control C and escape, right, quit, so cd dscj, and we'll just move to nvim and यहाँ पर lead code problems ls where the name of the problem, the main window है ना, main window dot cpp, not here, include bits stdc++ h, and we'll just escape right quit. यहाँ पर मेरे पास में main window dot cpp using namespace std main written controls d, and we'll just move to this. Let me just read out the question. Substring. Two strings, S is there, D is there. Return the minimum window substring. Set of S is that every character in D, including duplicates, is including in the window. If there is no such substring, return the empty string. This test cases will be generated such as the answer is unique. Let's say your key is your ABC, B, A, N, C. What do you mean by that? Using minimum window substring of S is that every character in D, including duplicates, is including. What do you mean by including duplicates? A N N is the minimum window of string B A N C include A B and C from string T. Okay, okay. Including, what do you mean by duplicates then? Minimum window, return empty string if there is no window. Both A's from D must be included in the window. Uh, See, okay, that's the case. 10 to the power of 5 is your NNM. उसके बाद में basic check for it. अगर मेरे पास में T dot size is basically greater than S dot size, in that case return, what do you return, एक empty string return कर दो. Otherwise do this मेरे पास में input is this, मेरे को चाहिएगा I just need ADOBEEC code bank ABC. ठीक है. Okay, where do we get this? Just move to the any occurrence if that character exists. If that character exists, go till the iteration at the point where you have fulfilled the string characters, including the duplicates. ठीक है? So you need the exact count of frequency or the exact number of frequencies. So you go to that specific case, fulfill the sequence. If it is there or not, collect the size of it, put it in minimum. ठीक है? Perfect. So what happens is मेरे पास में
इंटीजर n इज योर s डॉट स्ट्रिंग नहीं, साइज आ क्यों नहीं रहा है यहाँ पे? इंटीजर m इज योर t डॉट साइज, बाय द वे साइज आना चाहिए। अनऑर्डर्ड मैप टाइप नेम, ओ भाई ये सब क्या आ गया? इंटीजर टाइप नेम क्योंकि डिक्लेयर नहीं है ना, तो वो उस वजह से शो नहीं करेगा। we'll just declare it. By the way, std नहीं होगा यहाँ पे। no, अच्छा std ऊपर आ नहीं रहा, उस वजह से नहीं आ रहा क्या ये? sts वही मैं बोल रहा हूँ, std आना चाहिए तब, उस वजह से it is not showing me. So unordered map is there. The first thing it is gonna store is मेरे पास में character, उसके बाद में it is going to store the frequency and I'm gonna name it as map. Run a for loop on integer I as 0, condition as your I less than n। यार इतना बड़ा कौन लिख देता है भाई, क्या हो रहा है, ये क्या लिखा हुआ है भाई, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा है कौन सा फॉर लूप है। अम, कोई नहीं, धीरे धीरे हाथ बढ़ जाएगा आज, नो। लेस देन एन होगा, एन होगा नहीं, एन नहीं होगा। लेस देन एम आई प्लस प्लस, मेरे पास में एम का जो व्हाट इज इट फॉर एवरी कैरेक्टर इन एम। यार इतना लेंथी करने के बजाय मैं डायरेक्टली डिलीट करूँ इसको। फॉर ऑटो सी एच इन, मेरे पास में जो मेरी टी वाली स्ट्रिंग है उसके अंदर सी एच की जगह पे कैरेक्टर नहीं कर रहा भाई, मैं क्यों इरिटेट कर रहा है मेरे को। फॉर ऑटो कैरेक्टर है ना वो, अच्छा टाइप टाइप कैरेक्टर, ओके ये मेरे को खुद से दे रहा है, कोई नहीं। सो फॉर ऑटो कैरेक्टर इन दी टी, व्हाट आई डू इज मैप के अंदर आई पुट इन सी एच इज आई मीन बेसिकली प्लस प्लस हो जाएगा, दिस काउंट्स ऑफ दी, मेरे पास में जो मेरा फ्रीक्वेंसी मैप है that is getting prepared. Now I have the frequency map getting prepared. फिर उसके बाद में ऊपर एक चेक लगा देते हैं which is regarding the initial, if अगर मेरे पास में n is less than or equals to, if it is equals to तो हो सकता है, but if n is strictly less than मेरे पास में m, in that case simply ergc return some, what's the expression that we are gonna return? Return मेरे पास में एक empty string, that's it। यार नहीं, now, this is the basic setup that has been done for this problem. Now what happens is I declare a pointer which is this to the end for every character or the for every subset or what सेम वही होने वाला है, मतलब कल वाले क्वेश्चन की तरह ही। इट इज गोइंग टू टाइम, मतलब टाइम लिमिट मेरी एक्सीड रहेगी। इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन, वो जो सबस्ट्रिंग वाला जो सेक्शन है वो उठा करके मुझे लेना। हाउ डू गेट दिस, हाउ डू यू गेट दिस देन? जितने पॉसिबल सेक्शंस हैं उनके लिए चेक करो क्या? नहीं यार। Um, what I do is I basically go for a for loop on every character, run a loop till the length. So what is it doing? मेरे पास में the overall length of n is 10 to the power of 5 and every character could be 10 to the power of 5, so that becomes 10 to the power of 5, 10 to the power of 10 operations, which is actually going to the time limit exceeded. So what are we going to do? Um, we create a vector array, add it to it, एंड अगर उस सेक्शन के अंदर मेरे पास में मिनिमम विंडो पता करनी है ना मेरे को। यस, देन व्हाट इज द केस देन? एक काम अगर मैं कर लूं कि आई थिंक देयर इज अ सिंपलर अप्रोच टू दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन, है ना?
कि मैं सिंपली उन नंबर्स की जो इंडेक्स है वो स्टोर कर लूँगा एंड सिंपली उसकी परमिटेशन है वो बस, समझ रहा है, जस्ट जस्ट स्टोर दियर इंडाइसेस एंड द मोमेंट उसकी जो परमिटेशन है, कल वाला ही क्वेश्चन हो जाएगा, उसकी बस इंडाइसिस का जो डिफरेंस है वो रिटर्न करना है। सिंपली कल वाला ही क्वेश्चन है यार ये, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाँ, दैट्स अ परमिटेशन ऑफ दीज numbers, I mean these characters, और दिस जस्ट वन स्टेप अहेड ऑफ इट, है ना। तो मेरे पास में जो मेरा बेसिक सेटअप है वो तो हो गया है, दिस इज बेसिक सेटअप। Yes. Now what are we going to do is कि auto cht map ch c plus plus, so we just need to figure out कि उसके इसमें और इसमें कितना एट मैक्स कितना डिफरेंस है। तो हर एक कैरेक्टर का जो इंडेक्स है वो स्टोर कर दो इन अ वेक्टर पेयर। वेक्टर पेयर में क्यों, एक अनऑर्डर्ड मैप ही प्रिपेयर कर लो, उसका जो इंडाइसेस एंड ऑल है ये सब। एक काम कर, अनऑर्डर्ड मैप की जगह पे एक वेक्टर पेयर ऑफ टाइप दिस एंड कैरेक्टर एट कॉमा इंटीजर, वेक्टर ऑफ टाइप कैरेक्टर नहीं मेरे पास में, इट वुड बेसिकली बिकम मेरे पास में पेयर पेयर ऑफ कैरेक्टर कॉमा इंटीजर, बेसिकली वी आर स्टोरिंग द subname this, and I will simply run a for loop on every character of this one, and if that specific character belongs to this, so just get its index, and that's it. So I'm not doing this ये वाला loop नहीं करने वाला हूँ मैं। So what we are doing is basically for auto chin मेरे पास में in the string number s, and if map dot find constant key type मेरे पास में ch is not equals to map dot n, that means that specific key exists in this specific domain, or what do we say, find x की बजाय मैं डायरेक्ट एक्सेस कर देता हूँ, पॉइंटर क्यों निकालना, डायरेक्टली मैं बोलता हूँ मेरे पास में सी एच, इफ दैट एग्जिस्ट तो वो मेरे को ट्रू रिटर्न कर देगा, ज़्यादा बड़ा कोड भी नहीं बनेगा हमारा। सो इट बिकम्स ट्रू इफ अगर बोला कैरेक्टर उसके अंदर है। एंड आई थिंक एक काम करना चाहिए मुझे, विच इज़ कि integer I as 0, I less than मेरे पास में n, I प्लस प्लस, एंड मेरे पास में कैरेक्टर सी एच इज योर एस का जो ith एलिमेंट है। सो इफ दैट स्पेसिफिक कैरेक्टर एग्जिस्ट इन दैट मैप, इन दैट केस सिंपली मेरे पास में जो सब वेक्टर है सब डॉट पुशबैक आ क्यों नहीं रहा है भाई, पुशबैक आना तो चाहिए, कोई नहीं, पुशबैक मेरे पास में टू थिंग्स विच इज मेरे पास में कैरेक्टर परफेक्ट कॉमा द कैरेक्टर नहीं आएगा सी एच आएगा, कैरेक्टर स्टार मेरे पास में जो उसकी करंट इंडेक्स है वो मेरे पास ऑप्शन कर देंगे हम लोग। सो आई हैव समथिंग लाइक उसके इंडाइसेस में हमने जो फालतू के जो कैरेक्टर्स हैं वो हटा दिए, एंड वी हैव द इंडाइसेस ऑफ एवरी सच कैरेक्टर वाला कैरेक्टर, और उसकी जो इंडाइसेस है वो उसके अंदर ऑप्शन कर दो, कर दिया हमने। we have now add 2 to the 2 times of 10 to the power of 5 iterations as of now, एंड चेकिंग तो ऑप्टिमाइजेशन 1 बोल दो या फिर ऑप्टिमाइजेशन 3 4 ऐसा कुछ हो सकती है। नाउ व्हाट हैपेंस इज मेरे पास में आई हैव अ वेक्टर array which suggests me this, नाउ व्हाट आर वी गोना डू इज इसके जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके ऊपर पिछले वाला जो कोड था, कल वाला जो कोड था, वी आर गोना डू एंड यू नो उसका जो कोड है वो फेच करके देखते हैं। Map string unsigned. Let me just format the document once. Okay. What this code used to do was मेरे पास में string words for unsigned offset, ठीक है। See, this was the very same question, मेरे पास में इन words की permutations बता रहे थे वो, वहां पर यहाँ पर words के साथ में हम लोग permutations कर रहे थे, वहां पर क्या है individual characters के साथ में भी हम do with the help of
अब मेरे पास बेसिकली कैरेक्टर्स के साथ में करना डू दी परमिटेशंस। सो ए बी सी डी, अब उनकी कुछ भी परमिटेशंस हो सकती हैं। सो व्हाट आर वी डूइंग हियर इज एवरी टाइम ऑफसेट एंड लेंथ, मेरे पास में क्या है यहाँ पे, लेंथ इज योर वर्ड जीरो डॉट साइज, तो लेंथ इज माई वन, ऑफसेट एक बार, यानी just have to do this one time and send offset। offset की जगह पे I just put it as 0 or what, length is my one word 0th dot size, which is this single word length, and size is your 0, string unordered scene, offset is your I as your offset, which is your 0 से शुरू होगा, I plus of length less than equals to your s dot size, I plus equals to your length, string sub is your substring, substring of the what length, substring of the length 4। यहाँ पर हम लोग लेंथ चेक कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग लेंथ चेक करने की जरूरत नहीं है। सीन डॉट क्लियर साइज एज योर 0 एंड कंटिन्यू, सीन सब, एक सेकेंड यार, आई एम गेटिंग इरिटेटेड फॉर दिस पार्ट। लेट मी गो टू द क्वेश्चन बैक। अब यहाँ पे um, कैसे किया जाएगा, the time limit is basically going to exceed if you are going to check for every possible substring or every possible iteration of it, ठीक है ना। सो यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो का यूज किया जाएगा, ना कि every possible combination of it। सो यू स्टार्ट एट दिस, यहाँ पर इसमें से रिमूव दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, यानी कि एक बार एक अनऑर्डर्ड मैप टेम्परेरी क्रिएट करो, एंड द मोमेंट इट इक्वल्स, the moment the size of this specific unordered map size, basically जो मेरा, if अगर मेरा size overall size के बराबर moment the overall size becomes equal to the overall size, just embed into the answer, and क्या कहते हैं, now what do we do is कि basically इसको आगे मूव करेंगे, इसको आगे मूव करेंगे। So since the size is currently equal, तो उसकी और इसकी जो index है, we'll just fetch them out and get them into the order। और क्या किया जा सकता है, अ, और क्या 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 किया जा सकता है यार, एक सेकंड, यहाँ पर इवन बेटर 0 1 2 3 4, वी डोंट नो द इंडेक्स राइट। एक मेन जो प्रॉपर स्ट्रिंग है हमारी, वो डिक्लेयर कर सकते हैं क्या हम लोग यहाँ पे, एक जो मेन हमारी प्रॉपर स्ट्रिंग है, इसका यूज करके सिर्फ उन जो फालतू के कैरेक्टर्स उन्हें हटा करके जस्ट जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं 0 1 2 3 वाइज एक्सेसिंग है, वो भी आसान हो जाएगी, है ना। 0 1 2 3 4 एंड ऑल, तो उसका जो डॉट सेकंड वाला पार्ट है, वी आर गोना स्टोर दैट स्पेसिफिक वेक्टर एलिमेंट। सो आई थिंक हम लोगों को क्या है कि ये इतना बड़ा वेक्टर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। लेट मी जस्ट डिलीट इट आउट, ये क्या कर दिया मैंने, ये इतना रीजन, लेट मी जस्ट डिलीट दिस आउट, आई थिंक दिस इज परफेक्ट। सो व्हाट वी कैन डू इज, क्या कर रहा हूँ यार मैं, पीएमआर क्या है भाई ये, प्लीज यार मत इरिटेट कर मेरे को। यस, vector of type, we just store the indices, we run a for। अबे यार इतनी गंदी आदत हो गई ना इंटर दबाने की, विच इज एक्चुअल में पता है, पहले डेवलपमेंट पहले थोड़ी ना थी ये सब चीज़ यार, इसी बकवास कर रहा है। फॉर ऑटो कैरेक्टर नहीं आएगा, फिर से वही गलती कर रहा है। इंटीजर आई इज 0, आई लेस देन n and I plus plus। नाउ इफ अगर मेरे पास में मैप के अंदर, let me just get the character, so character ch is your, इसका जो ith एलिमेंट है वो आ जाएगा। एंड जस्ट इन केस इफ अगर मैप के अंदर मेरे पास में ch मिलता है, इन दैट केस सिंपली indices indices डॉट पुशबैक मेरे पास में वन एलिमेंट, हम लोग आई पुश इन कर देंगे, आई गेस आई पुश इन पेज डाउन हियर।
So we just push in the I index and साथ में we are also preparing the string which is the string to. यार हाथ क्यों नहीं काम करते मेरे. string to work नाम दे देते हैं and this is empty string. what are we gonna do है. मेरे पास में जो to work वाली string है plus equals ये और character add में add हो जाएगा and basically I have the indices उस specific position के ऊपर we have the indice 0 1 2 करके we can access it. now what happens is कि अब इस specific index के लिए मैं इस specific string के ऊपर I wanna loop इस specific index के ऊपर I wanna loop and एक और चीज़ यहाँ पर एक और safety check डाल सकता हूँ मैं कि integer new n is your जो हमारी टू वर्क वाली जो array है डॉट साइज एंड इफ अगर मेरे पास में जो न्यू n है न्यू n इफ इट इज स्मॉलर देन मेरे पास में जो हम लोग ओरिजिनली जिसके साथ में काम करना था इन दैट केस सिंपली रिटर्न मेरे पास में एम्प्टी अरे. दीज वर जस्ट दो फालतू के चेक्स हैं जो कि लगने चाहिए बेसिकली. नाउ 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 वी मूव बैक ऑन टू दी ओरिजिनल. बात है कितनी देर हो गई हमें करते हुए. इट्स बीन अबाउट तो फक भाई 21 मिनट्स ऑलरेडी फक हो चुकी है भाई. कहाँ गए हमारा ये. हाँ. So what happens is if n new n is less than m, return the space. Now, if अगर new n is less than m, return the empty space, empty space, empty space, empty space. Now what am I left with? Basically, हर एक piece के ऊपर जाना है and just use the sliding window to iterate over every possible combinations or what do you say it as. मतलब basically shifting the windows and the moment the size overall size of the context integer sz is my 0 and integer required जो हमारे पास में लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगी. द रिक्वायर्ड लेंथ एक्चुअली बिकम्स m. ठीक है. रिक्वायर्ड लेंथ मतलब उसको नाम देने के लिए बेसिकली रिक्वायर्ड लेंथ इज योर m is something different and required length is actually different and add एक integer आंसर स्ट्रिंग रिटर्न करनी है मेरे को. एक आंसर स्ट्रिंग रिटर्न करनी है आई गेस. एक सेकंड मतलब रिटर्न में क्या देना है मेरे को. मैं एम्प्टी चीज़ें तो दे तो रहा हूँ वहाँ पे. अच्छा वो जो सब स्ट्रिंग है वो रिटर्न करनी है मेरे को. अरे फक भाई. फिर वो बीच. एक सेकंड. अच्छा हाँ मेन जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसका एक एंड और स्टार्ट जो है मेरे पास में वो स्टोर कर लूँगा मैं. फिर वो स्टोर कर लूँगा इफ़ अगर वो उससे छोटा है इन दैट केस जस्ट स्टोर इट. तो मेरे पास में इंस्टेड ऑफ आंसर मेरे पास में integer st currently 0 and integer n currently set to 0. we don't know कि क्या चीज़ कहाँ पे जाएगी. so what we do is कि the moment इसकी लेंथ नहीं एंड माइनस ऑफ स्टार्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता. सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में जो उसकी लेंथ है ना साइज जो है वो उसकी इक्विवेलेंट होना चाहिए. परफेक्ट. if it is equals to what's the end of the termination मतलब इसका जो एंड क्या होगा. द एंड ऑफ इट इज मेरे पास में जो रिक्वायर्ड लेंथ है रिक्वायर्ड लेंथ टोटल साइज बेसिकली न्यू एन माइनस ऑफ एम. न्यू एन माइनस ऑफ एम. तो मुझे ये दे देगा दीज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स इज व्हाट हाउ मेनी इटरेशंस यू हैव टू मेक. मान ले 10 है. रिक्वायर्ड लेंथ इज 3. 7 is the number of iterations that I want to make. 0 1 2 3 4 5 6 7 less than 7. Yes, perfect. So for integer I as 0 I less than मेरे पास में as z माइनस ऑफ जो मेरी रिक्वायर्ड लेंथ है. ये आ क्यों नहीं रहा भाई. शो तो होना चाहिए यहाँ पे as z minus of m I is less than as z minus of m and I plus. So I just loop over I less than my size minus of m. Size minus of m is my the required length जहाँ तक at max हो सकती हैं possibilities.
दैट्स बेसिक स्टार्ट ऑफ द इटरेशंस एंड ऑल। या फिर जब तक मेरा स्टार्ट छोटा एंड से नहीं यार, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। फॉर एवरी इंटीजर इन दिस स्पेसिफिक एरिया और व्हाट, एक अनऑर्डर्ड मैप, टेम्पररी अनऑर्डर्ड मैप डिक्लेयर करो। गो टू दी कैरेक्टर इफ दैट दिस स्पेसिफिक कैरेक्टर एग्जिस्ट इन द ओरिजिनल वन। अगर ये वाला कैरेक्टर ओरिजिनल एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है तो if it exists in the original system, just increase the length. How do I get the count of, मेरे पास में उसकी frequency। एक काम करते हैं कि अच्छा हाँ, एक एक काम मैं कर सकता हूँ, साइज मेरे पास में किसके बराबर हो जाएगा, साइज इक्वल्स जो इसका जो साइज है उसके बराबर। एंड इफ इट एग्जिस्ट तो साइज माइनस माइनस, इफ इट एग्जिस्ट साइज माइनस माइनस, इफ इट एग्जिस्ट एंड देन दैट्स द की। लेट्स से एक बार वहाँ पे एग्जिस्ट करता है एंड दो बार, तो साइज माइनस माइनस इज दिस, दो बार सब्सट्रैक्ट हो गया चीज़ें। एंड वहाँ पर जो ओरिजिनल साइज था मेरा 2 से शुरू हुआ था, बेसिकली 1 से शुरू हुआ था। एंड नहीं यार, कुछ तो एरर कर रहा हूँ मैं, एक सेकंड में समझ में नहीं आ रहा क्या है ये, कहाँ पर एरर्स कर रहे हैं हम लोग। 10 लाइन टेम्पलेट दैट्स ऑलमोस्ट सबस्ट्रिंग प्रॉब्लम्स, सी प्लस प्लस ऑल लैंग्वेज। Yes. So what he did was MTTMD is not perfect. Basic check। ओए ये क्या किया इन्होंने, मैप कहाँ क्रिएट किया। यस, here is the map C and map S n plus plus, n is less than, start is 0, end is 0, minimum length is your integer max। ये है, एक मिनट रुको, मैं अपना जो कोड है that let me just paste it out over here and if any modification that we need to make। एक सेकंड, ये सब क्या इंपोर्ट कर रहा है, इंक्लूड है अपने आप इंपोर्ट कर रहा है ये, आई डिडंट न्यू ये भी फीचर है इसमें। लेट मी जस्ट कंट्रोल ऑल दिस, कंट्रोल वी, एंड यहाँ पर लेट मी जस्ट बिफोर रनिंग चेक कर लेते हैं। मैप इज 128, मैप 128 जीरो, एक सेकेंड 128 क्या था ये, अच्छा ओरिजिनल मैप एंड काउंट ऑफ दैट स्पेसिफिक कैरेक्टर टू प्लस प्लस। अच्छा हाँ, कैरेक्टर तो तुम्हारे पास 26 हो सकते हैं ना, कैरेक्टर्स एट मैक्स could be 26। ओह यस, बात तो सही है यार, कैरेक्टर तो एट मैक्स 26 हो सकते हैं। तो एट मैक्स इसकी इसकी जो लेंथ होगी या फिर नंबर ऑफ कीज इसके अंदर 26 ही होंगी। इंटीजर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो सकती है। स्टार्ट मेरे पास में मिनिमम लेंथ इज योर इंटीजर मैक्सिमम, स्टार्ट इंडेक्स इज योर 0, वोट n is less than s dot length, and if s n plus plus minus minus is greater than 0, that means that's there, count minus minus, count is your what, count is your t dot length, count minus minus, while count is 0, जब तक मेरा count 0 है। एंड ये कर क्या रहा है मुझे समझ में नहीं, अभी भी नहीं आया मेरे समझ में, what is he trying to do and what is the error that I am making, है ना। we need to figure out ना कि हम क्या error कर रहे हैं, हमारी approach कहाँ गलत हुई। so see, मेरी brute force way approach would have had worked। the thing was कि obviously बात है, कल भी मैंने वही ट्राई की थी brute force approach and it ended up becoming run time error और बहुत सारे अलग अलग टाइप के errors हो रहे थे। सेम अप्रोच थी मेरी, कुछ इसी प्रकार से ही अप्रोच थी, दो बार अनऑर्डर्ड मैप डिक्लेयर किया, हर एक अनऑर्डर्ड मैप के लिए जस्ट चेक फॉर दी दैट स्पेसिफिक सबसेट, अगर मेरे पास में वो जो फ्रीक्वेंसी मैप है वो इंक्लूड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। So the start and end दो pointers are there, minimum length is your integer maximum, start index is your 0, starting index is your 0, starting index is 0, ठीक है। now for character c as your t, I mean एक मैप क्रिएट किया बेसिकली, हर एक की फ्रीक्वेंसी होती है मेरे पास में 26 बिट की, वो प्रिपेयर कर लिया हमने, मैप का यूज़ करके कर सकते हो चाहे किसी का भी यूज़ कर सकते हो। while n is less than s dot length, मैप n की बात हो रही है बेसिकली, ये जहाँ से लेकर के s dot length तक जा सकता है, ठीक है। if map s n plus plus n प्लस प्लस एंड को यूज करो एंड देन प्लस इट, प्लस 1 टू इट।
count is equal to count minus of 1, n is equal to n plus 1. But are we using n plus plus? Plus plus n is basically add that number and then use. That's the key. And इसमें क्या है? Use it then add to it. n plus plus ये होता है guess? कहीं गलत तो नहीं हम लोग? नहीं. तो map s n plus plus क्यों कर रहा है ये? Basically what is he intending to do? स्ट्रिंग का जो n प्लस प्लस वाला नंबर है जीरोथ, लेट्स से जीरोथ मेरे पास में नंबर है, कोई भी रैंडम स्ट्रिंग थी. टेस्ट केसेस कहाँ है मेरे पास में? टेस्ट केसेस एक सेकंड, ये क्यों भूल गया भाई? हाँ, टेस्ट केसेस टेस्ट रिजल्ट इज डिफरेंट. सो व्हाट डू वी हैव? पहले हम लोग ए पर गए. वी चेक इफ दैट स्पेसिफिक ए n प्लस प्लस, बेसिकली ए पर मूव किया एंड देन यू मूव टू डी. ए के लिए चेक किया तुमने, n was at initially at a. You check for a. If that is greater than 0, that means a की frequency is greater than 0, यानी at least 1 है. Use it then minus minus. Use it and then subtract 1 from it. तो एक frequency, if it is there, if that specific frequency is greater than 1, नहीं 1 है, हो सकती है. हाँ, ठीक है. Count minus minus. In that case, reduce up the count, यानी that specific number exists in there. While the count is 0, while the count is 0, has the count become 0? नहीं हुआ ना अभी के लिए. So we move to the other value, did the same key thing. मेरा जो मैप था उसमें से एक वैल्यू रिड्यूस अप करी हमने, and then we just ended up doing so. While count is your 0, okay, if and minus of start is less than, if oh, basically what he's trying to do is he he created a map original length के साथ में, he is making modifications and all. Original map create किया, he checked कि उसमें से basically he picked up the number, he got the number उसके पास में जो भी उसमें changes करने थे. So I think what we can do here is, I got the approach by the way. Where can we modify this specific approach? So we have the start, we have the end, we have the required length m, we have the size, we have something so called as the map. Now what we do is we simply run a while loop, and मेरे पास में n is smaller than s dot length is your n. अभी के लिए will consider whatever the person is trying to intend me. map का जो string है s का n plus plus, map का minus minus, until and unless it is greater than 0. काउंट हमने डिक्लेयर किया है क्या अभी के लिए? इसको काउंट मान लेते हैं हम लोग, एंड लेट मी जस्ट गिव इट द साइज ऑफ एम. रिक्वायर्ड लेंथ बोलूँ मैं? चलो इसको 0 मान लेते हैं, एंड इंस्टेड ऑफ काउंट रिक्वायर्ड लेंथ इज समवॉट द सेम. मेरे पास में जो रिक्वायर्ड लेंथ है दैट डज द सेम जॉब. ये होने के बाद में व्हाट वी डिड वाज कि बेसिकली यूटिलाइज एवरी नंबर, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक नंबर यूटिलाइज करो, एंड रिक्वायर्ड लेंथ is equals to your 0. By the way, नोटेशन गलत है नाम का, लेकिन ठीक है. So n minus of start, minimum length is your integer maximum. Minimum length is your n minus of start, which is the required length, substring of that start index and the minimum length out of it. Start, and if it is less than the ऊपर हम लोग डिक्लेयर कर देंगे the very same variable which is the minimum length. Tab integer minimum length is your integer max, and I think mostly ये वाला जो काम है, it is mostly start index is your original जो start थी तुम्हारी sz मान लेता हूँ ये इसको. sz is your stay, minimum length is your minimum length,
एक सेकंड, मिनिमम लेंथ स्टार्ट इंडेक्स इज योर, इसमें कोई चेंजेस कर रहे हैं क्या हम लोग? नहीं, इज योर स्टार्ट, इफ अगर हमें मिलता तो ही हम लोग स्टार्ट को चेंज करेंगे ना, तो उस वजह से वी आर डूइंग दिस। एंड माइनस ऑफ स्टार्ट, आई थिंक दिस इज आल्सो फाइन। दो वाइल लूप्स ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे पास में। एंड इफ अगर we have the same code, जिसमें पास में st and this would be changed, पास में map st plus plus, basically पहले you broke, just you took all of the things out of from that specific array and then you broke it out, है ना? जो मेरे पास में required length है, that becomes this, and simply before the iteration, end of the iterations, let me just format the document once. एंड मुझे जो है इसकी नीड पड़ेगी क्या खाम खा में? वी शुड नॉट, वी शुड नॉट डिक्लेयर दीज वंस स्ट्रिंग टू वर्क, ये नहीं आएगा। देन देयर इज न्यू एन की जरूरत है क्या? नहीं है। उसके बाद में एज जेड वी आर यूजिंग ना, एज जेड को कोई नहीं, कोई इशू नहीं है। वंस एंड व्हेन मेरे पास में मेरा लूप है, इट गोज ऑन रिटर्न, मेरे पास में मिनिमम लेंथ इज योर integer max, in that case simply return मेरे पास में empty string, otherwise just return s dot sub str set comma minimum length. Really nice solution. मैंने this is the first time I am seeing this kind of approach कि उसको pick किया, move to the other value, मतलब I would have elaborated this specific thing, but this is the first time I'm seeing this kind of code or this kind of approach. Although this is not typically safe for the production code, but it is very nice for competitive programming or the lead code type. I will just note this specific thing out. This is really, really nice, and I really appreciate whoever did, I mean, whoever did this specific kind of code or just thing, and I really liked it. Just really like this map as n plus plus and then minus minus. That's very nice. I think this is fine. We created a map of characters and I said and all. I think let me just give it a run. So we have test results. पहले तो error आना है. Yes, we have the error. Okay, BANCK. So Z से लेकर के minimum length तक. Minimum length has been updated. What's the error that we making? NNM. Count is your this. Okay, 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 okay. s.empty, t.empty, s.empty or s is this. Um, I should just remove this check and मेरे पास में एक मिनट एन एन एम तो वही रहेगा, लेकिन ये वाला जो चेक है मेरे पास में ये हटा देते हैं एंड rather than this I just include this specific check. This is much more better. s.empty, s.length, t.length. By the way, this is the same, but I don't know कि मैं error कहाँ पे कर रहा हूँ. Count is your t.length. So we had your required length की जगह पे, let me just highlight कहाँ कहाँ पर है मेरे पास में required length. Required length we are using 4 times is your m. M is your what? T dot size. T dot length बात एक ही है. N minus of start, n minus of st, while n is less than the n, count is equals to 0, and n minus of start. Okay, we move this one to the out of the thing, but this should have been in this scope. हो जाती हैं वही गलतियाँ सभी से. आई थिंक अब हो जाना चाहिए. Accepted, right? One case थी. Let me try and submit it. आज वाली video it's gonna be huge and long. Perfect, we made it. I mean, I wouldn't call this cheating. I would call this learning.
क्योंकि मुझे नहीं आता था क्वेश्चन, दैट्स ट्रू, मुझे नहीं आता था, दैट्स द रीजन आई लुक्ड इनटू इट एंड आई रियली लाइक द अप्रोच, वो जो n प्लस प्लस एंड देन माइनस माइनस हो किया है, दैट्स रियली नाइस एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग द रीजन सेंटर।